अब हम लोग आगे देखते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। देखो पहले इसका डेफिनेशन क्या है। द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट पी ऑफ ए कर्व पे एक पॉइंट पी ले लिए, गामा उसको बोले ऑफ क्लास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 is the limiting position of the plane which contains the tangent line at P and a neighboring point Q as Q tends to P। ये हो गया डेफिनेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। ये एग्जाम में कई बार पूछ देता है, तो इसको तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना। It is easy to see that when gamma is a straight line, the osculating plane is indeterminate at every point of the line। देखो उसका इक्वेशन कैसे बनाया गया है ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, देखिए ये है आपका कर्व गामा। दिस इज योर कर्व गामा। उस पर एक पॉइंट पी है, पी पर एक टेंजेंट खींचे हैं, दिस इज योर टी। देयर इज अनदर पॉइंट क्यू ऑन द कर्व। पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट ओ से आर एस नॉट एंड पॉइंट क्यू का है आर एस। देयर इज अनदर पॉइंट टी, उसका पोजीशन वेक्टर है आर। So let gamma be a curve of class greater than or equal to 2. Let gamma be parameterized with respect to arc length s so that its equation may be written as r is equal to rs. Let rs naught and rs denote the position vectors of two neighboring points p and q on gamma with s naught and s as parameters. Let r be the position vector of a current point t on the plane. ये point t on the plane containing the tangent line at P and the point Q। इस प्लेन में ये टेंजेंट लाइन भी है और पॉइंट Q भी है और इसी प्लेन में पॉइंट T भी है। Then the vectors PT, वेक्टर PT क्या होगा? वेक्टर PT R minus RS naught and this T is R dash S naught, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। And vector PQ is RS minus RS naught। ये तीनों वेक्टर का हो गया। Lie in this plane PT, PQ and this vector T all lie on this plane. Hence their scalar triple product must be 0। तो जब एक ही प्लेन में है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स ये बताता है हमको वॉल्यूम के बारे में बताता है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज R minus RS naught this PT dot R dash S naught this T and cross RS minus RS naught this PQ is equal to 0। यानी कि वॉल्यूम मेड विद these three vectors is 0 because all they lie in a plane, which is therefore the equation of this plane। This is the equation of the plane। Now expanding RS in powers of S minus S naught by Taylor's theorem, we get RS can be written as RS naught plus H into R dash S naught plus H square by factorial to R double dash S naught plus other terms of order H cube and higher, where H is your S minus S naught। Hence the equation 1, this equation will reduce to यहाँ पे RS minus RS naught की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देना है। R minus RS naught dot R dash S naught cross H R dash S naught plus H square by factorial to R double dash S naught plus order H cube, this is equal to 0, or R minus S naught dot R dash S naught cross R double dash S naught plus order H is equal to 0। क्यों? Because R dash S naught cross R dash S naught will be 0। वेक्टर प्रोडक्ट इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि sin थीटा थीटा इज 0, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ these two vectors are 0। तो केवल हमारे पास ये मिला और h square by 2 factorial 2 से डिवाइड कर देंगे, then this will be your order H। Therefore the limiting position of this plane as Q tends to P, अगर Q P की ओर टेंड करेगा then this H will tend to 0।
that is as h tends to 0 is r minus r s naught dot r dash s naught cross r double s s naught is equal to 0, provided the vectors r dash s naught and r double s s naught they are linearly independent. अगर ये linearly independent है तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r minus r s naught r dash s naught r double s s naught is equal to 0, which is the equation of the osculating plane at p. अब इसको हम बोलेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन कहाँ पर, पॉइंट पी पर। तो ये भी तुम्हें निकालने के लिए दे देता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। रिमार्क देखो, it is evident from equation 2 that the vectors r dash s naught and r double s s naught lie in the osculating plane, and therefore the vector r dash s naught cross r double s s naught is normal to the osculating plane at p. तो नेक्स्ट देखिए, the equation of the osculating plane in terms of general parameter. Let the equation of the curve be given in terms of in terms of general parameter t, then r dash will be dr by ds. So it is dr by dt, ds by dt. It means it is r dot by s dot, and r double dot will be r double dot by s dot square minus r dot s double dot by s dot cube. Substitute these values in equation 2, then you get r minus capital R minus small r dot r dot by s dot cross r double dot by s dot square minus r dot s double dot by s dot cube is equal to 0. So, or this is your r minus capital R minus small r dot r dot cross r double dot is equal to 0. Why? Because this is r dot, this is r dot, and there is a vector product. So this term will be 0. We will have only this, and s dot square multiply with this. So it is equal to 0. It means the scalar triple product capital R minus small r dot r double dot is equal to 0, which is therefore the equation of the osculating plane in terms of t. ये in terms of t हो गया, और इसके पहले वाला जो था this is your in terms of s. तो दो तरह का हो गया इक्वेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, in terms of s and in terms of t. एक और फॉर्म है, that is your Cartesian form. Let x, y, z be the coordinates of a current point P on the oscillating plane at P. P पर oscillating plane है और वहां पर एक पॉइंट करंट पॉइंट T है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, whose coordinates are small x, small y, small z. अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, z, स्मॉल x वाला, स्मॉल है सब. Then capital R will be xi plus yj plus zk, and small r is your small xi plus small yj plus small zk. Then capital R minus I small r will be x minus xi plus y minus yj plus x minus z. Now r dot will be differentiate this with respect to t. So this is equal to x dot I plus y dot j plus z dot k, and r double dot will be x double dot I plus y double dot j plus z double dot k. Hence the equation 3. Equation 3 is equivalent to equation 3 क्या था? Calculable product of these three vectors equal to 0, और इसका calculable product का मतलब डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट x minus x, y minus y, z minus z, x dot y dot z dot and x double dot y double dot z double dot is equal to 0. This is your Cartesian form of the equation of osculating plane at point P. तो तीन तरह का हो गया हमारे पास. इसके बाद एक और देख लो, अल्टरनेटिव डेफिनेशन कहता है, alternative definition of the osculating plane. The osculating plane at a point P of a curve is the limiting position of the plane which contains the tangent at P and is parallel to the tangent at a consecutive point Q as Q tends to P. This is your alternate definition. Alternatively, the osculating plane at P is the limiting position of the plane PQR through three consecutive points PQR as Q and R tends to P. ये भी एक तरह का definition हो गया, but first one is the best one, वही तुम लोग को याद रखने का है.
We now find the equation of the oscillating plane at P using this definition. The tangent vectors at Pt and a consecutive point q t plus delta t are r dot t and r dot t plus delta t. कोई दिक्कत इसमें नहीं है. Hence, the plane through the tangent at Pt and parallel to the tangent at q t plus delta t is perpendicular to the vector r dot t, vector product r dot t plus delta t. So this is r dot t, vector product r dot t plus delta t minus r dot t. Why? Because this r dot and r dot का vector product हो जाएगा 0 and hence perpendicular to the vector r dot t cos r dot t plus delta t minus r dot t by delta t. Therefore, as delta t tends to 0, the oscillating plane at P is perpendicular to the vector r dot t cross r double dot t. If r is the position vector of a current point on the plane, the vector capital R minus small r lies in this plane. It follows that capital R minus small r dot cross r double dot is equal to 0, or a scalar table product of three vectors r minus r dot r double dot is equal to 0, which is the equation of the oscillating plane. हम लोग पहले निकाल चुके हैं. This is the equation of the oscillating plane. So ये हमारे तरफ से आज का कंप्लीट है. अगर कोई तुम लोग को प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ